अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहले आप जो ये सामने नंबर्स देख रहे हैं, इसमें ये नंबर्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1। नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड काउंट फॉर एवर, नेवर एंडिंग काउंटिंग अप टू इन्फिनिटी। इन नंबर्स को आप नाम देते हैं, इन टाइप के नंबर्स को आप कहते हैं दीज आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। सेकंड टाइप जो यहाँ पे मेंशन की गई है, वो नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम ज़ीरो। स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड काउंट फॉर एवर अप टू infinity. These type of numbers are called whole number. याद रखें, natural numbers start from number 1 and whole numbers starts from the number 0 and count forever up to infinity. Then the third type is जब पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स को कंबाइन किया जाए, लाइक 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, काउंट फॉर एवर, एंड -1 -2 -3 and count forever. When here we combine positive whole numbers and negative whole numbers, this collection of numbers is called integers. What we called integers. 1 2 3 इनको हम कहेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, राइट, इंटीजर। और इनको आप कहेंगे ये हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये हैं नेगेटिव integers. What about 0? 0 is neither positive nor negative. 0 is an integer, no doubt 0 is an integer, but आप इसके लिए अगर आपसे पूछा जाता है ना कि नेगेटिव इंटीजर्स लिखें, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? -1 से आप 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स लिखें, आप 1 से लिखना शुरू करेंगे। लेकिन अगर 0 के बारे में पूछता है कि क्या ये इंटीजर से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे यस 0 इज एन इंटीजर, बट इसके सिंबल के साथ अगर पूछता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नीदर 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. कीप इन योर माइंड. ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर किस तरह के नंबर्स होते हैं? यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ. प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है कि लेट मी राइट द डेफिनेशन. अ होल नंबर्स मीन्स होल नंबर्स, बट इन द सेंस कि उसमें कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं आएगी, ठीक है. और होल नंबर होगा ये वाला ग्रेटर देन 1. अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, नंबर ग्रेटर देन, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स सारे जो हैं वो ग्रेटर देन 1 होंगे. एंड और दूसरी इसकी कंडीशन क्या है? विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स एंड ओनली, या एग्जैक्टली यू कैन से एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी उसको 2 नंबर्स ही डिवाइड कर सकें, राइट. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट 2. 2 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं. 2 के पहला फैक्टर क्या है? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दैट्स इट. इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए तो 1 भी प्राइम नंबर नहीं है. वाई इज नॉट 1 इज अ प्राइम नंबर? बिकॉज 1 हैज ओनली 1 फैक्टर. वी हैव टू find the numbers that have exactly only 2 factors. 1 is not a prime number. Let's talk about 3. 3 के factors 1 and
जो इसको completely divide कर सके. 1 can divide 3 and 3 itself can divide 3. So 3 is a prime number. Let's talk about 4. Let's check 4. 4. 1 is factor, 2 is a factor, and 4 itself. So factors of 4 exceeds number 2. So 4 is not a prime number. 4 is not a prime number. So if I write the prime numbers, I will write 2. 2 is a prime number. 3 is a prime number. And 5 is a prime number. 7 is a prime number. And then 11 is a prime number, and up to so on. You see, I skip 4. I skip 4 and 6. 6, 8, 9, because all these numbers having factors more than 2. Okay, so let's talk another type of number is even number, even and odd number, right? Even number. इवन नंबर कौन सा होगा? ऐसा नंबर जिसको आप इवन कहते हो, उसके लिए कंडीशन ये है कि एक तो वो इंटीजर होगा. नंबर 1 कंडीशन कि वो नंबर जो है वो इंटीजर होगा. एंड द सेकेंड वन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल बाय यानी उसको 2 जो है वो डिवाइड कर सके. अगर उसको आप 2 से डिवाइड कम्प्लीटली रिमाइंडर 0 के साथ विदाउट एनी डेसिमल डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो नंबर जो है वो इवन नंबर नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल 6, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, ऑल दीज नंबर्स, 8 up to so on, all these numbers are even number. बड़े नंबर्स अगर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 0, 8, 0, 1, 5, 6, इसको चेक करना हो कि क्या ये इवन नंबर है या नहीं, तो आपने सिर्फ लास्ट नंबर को चेक करना है. लास्ट नंबर अगर इवन नंबर है, इजीली आप बता सकते हैं 6, 2, 4, 6, 8 एंड 10. दीज आर इवन नंबर्स. फर्स्ट जो 10 नंबर्स में आगे 12 है, 14 है, तो आपने सिर्फ लास्ट नंबर क्या ये इवन है, सो दिस इज विदाउट चेकिंग दिस इज एन इवन नंबर. दिस इज एन इवन नंबर. सो इफ आई राइट 1080, व्हाट अबाउट दिस? 0 के साथ अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो भी इवन नंबर होगा. लाइक यू कैन सी 20, 30, 40, ऑल दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स. सो लास्ट नंबर अगर 0 है तब भी जो रिक्वायर्ड नंबर अगर पूछा गया है कि इवन है या ऑड है तो आपने बता देना कि ये एक इवन नंबर है. आपने सिर्फ लास्ट नंबर चेक करना है. इधर से भी आपने सिर्फ लास्ट नंबर चेक करना है. And tell me about this number 11561. Clearly this is not an even number because this last number is not an even number. Let's talk about odd numbers. Odd numbers के लिए भी कंडीशन है कि वो इंटीजर होंगे, लेकिन इंटीजर तो होंगे बट दे आर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2. जैसे कि ऊपर आपको सीक्वेंस 2, 4, 6 का है, तो उसके अलावा जो नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11. अच्छा, इन इवन नंबर्स को और प्राइम नंबर्स को मिक्स नहीं करना. अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें प्राइम नंबर्स भी साथ में आ रहे हैं. इवन में से तो सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है, बाकी सारे जो हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं हैं. और ऑड में तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम भी हैं, जैसे कि 1 प्राइम नहीं है, ऑड नंबर है. 3 इज़ प्राइम एंड ऑल्सो ऑड. 5 is prime and also odd. 7 is prime and also odd. But 9 is not prime but odd. Right? And the next type of question number is square number. Square number किस तरह के होते हैं? जब आप किसी एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट मिलता है इसको आप कहते हैं स्क्वायर नंबर. दिस इज कॉल्ड 4 is called square number. डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अगर आप बुक के साथ साथ देखते जाएं तो प्रोडक्ट obtained when an integer is multiplied by itself. when an integer, बुक से साथ डेफिनेशन देखते जाएं, मैं वही रीड कर रही हूँ. when an integer, 2 is an integer,
is multiply by itself. इंटीजर की बात हो रही है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात हो रही है, राइट. बट द स्क्वायर नंबर इज रिजल्टेंट इज स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज this negative integer when multiplied by itself, when an integer is multiplied by itself, the product is obtained is square, and square negative and negative when multiplied they give positive result. So square numbers are always positive and obtained by the product of a number by itself. All right, let's talk about another type, fraction. फ्रैक्शन कैसे होते हैं? फ्रैक्शन की डेफिनेशन में जो मेन लाइन है वो लिखी हुई है, फ्रैक्शन नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, लाइक 2 इज अ होल नंबर एंड फर्स्ट वन पार्ट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटिंग लाइक अ फ्रैक्शन. अब होल नंबर इज 2, उसका वन पार्ट अगर आपने शो करना है तो आप इसे लिखेंगे 1/2 या आप इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं a/b, ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में. तो इसी जो मेन definition में जो main part है वो है part of a whole number. Like I have a circle having 2 parts. If I colored one part like this, then this picture can be represented by this fraction 1/2. 2 parts में से 1 part यानी 2 parts total थे, उस whole number का part अगर शो करना है तो आपको फ्रैक्शन नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी. आप उनको जब ज़ाहिर सॉल्व करते हैं तो डेसिमल में भी रिज़ल्ट आता है, तो आप कॉमन फ्रैक्शन में लिखते हैं इसको या आप इसको डेसिमल में यूज़ करते हैं, लाइक 0.5. इसका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 0.5. These are different types of numbers. Let's move to the exercise and check the numbers from question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिए हुए, मिक्स नंबर्स दिए हुए, उसमें नेचुरल भी हैं, इवन भी हैं, फ्रैक्शन भी हैं, डेसिमल भी हैं, इवन हैं, ऑड हैं, इंटीजर्स हैं. तो ये तमाम नंबर्स की कलेक्शन उन्होंने जब कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं तो हम इसको कहते हैं दिस इज़ अ सेट. चैप्टर 9 में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और ये एक सेट है, इसमें आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स दी हुई है. अब आपको इसमें से लिस्ट करने हैं ए पार्ट में नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आपने इसमें से निकाल के लिखने हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं. नेचुरल नंबर्स हम यहाँ से शुरू करेंगे. हमने देखा है नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में भी कि नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड काउंट फॉर एवर. स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड काउंट फॉर एवर. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो यहाँ से तो कोई भी नंबर हमें 1 से दिखाई नहीं दे रहा यहाँ तक. 3 is a natural number, 4 is a natural number, 6, 11, 16, 19 and 25. All these numbers are natural number given in the given set. पार्ट बी में इवन नंबर्स निकालने को कहा गया है. इवन नंबर्स लिस्ट करने हैं. इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्टली यू कैन से एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड इंटीजर्स. वो इंटीजर्स होने चाहिए और एग्जैक्टली 2 के ऊपर डिविजिबल भी होने चाहिए. तो here -4 you can see is an even number. We can divide it by 2 completely. 2 पे आप इसको completely divide कर सकते हैं. like 1 - 1/4 को अगर लिखें तो 4 को आप पहले डिवाइड करेंगे और नेगेटिव साइन लगाएंगे और आप इसको देख सकते हैं कि इसने रिमाइंडर 0 के साथ रिजल्टेंट आपको 2 दिया है, तो -2 इज अ रिजल्टेंट. सो कैन completely divided by 2. -4 is an even number. And -1. What about 0? 0 is an even number. 0 is an even number because 2 can divide 0 exactly, right? So 0 is an even number. What about 3? 3 is not an even number. 4 is an even number. 6 is an even number, and 16 and that's it. 16 is an even number. All right. Let's check the part 3, C part. In C part, we have to check odd numbers. Odd numbers.
odd numbers. Odd numbers are those integers that cannot be divided by 2 exactly. That cannot be divided by 2 exactly. -1 cannot be divided by 2, so it is an odd number. Okay. We have to check only integers. All right, only integers, not fraction, not decimals, only integers. 3 is an odd number, and you can say 4 and 6 are even numbers. 11 is an odd number, and 19 is an odd number, and 25 is an odd number. Next type of number, let me write the first the title, that we have to find out integers. We have to check the integers in the given set. Given set में integers निकाल के देने हैं. Integers are negative and positive whole numbers. Definition हमने पढ़ी हुई है. Integers are the negative and positive whole numbers. So -4, -1, 0, 3, 4, 6, 11, 16, 19, and 25. All these are called integers. In a part, we have to find only negative integers. Right? जैसे कि पहले भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो जब नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे तो उसमें हम 0 को शामिल नहीं करेंगे. वैसे तो इंटीजर्स में हमने 0 को लिखा है. 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव integers. All right, negative integers are only 2 in the given set, -4 and -1. What about fractions? In F part, fractions are required. Fractions or decimals you can write in this required condition. You can write 1/2. You can write 0.75. Just 2 numbers can be written in this form, in this type. The next type is square numbers. Square numbers जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, और वो रिजल्टेंट होंगे या प्रोडक्ट होगी वो जो प्रोडक्ट obtained by the number by itself. From start we can check all these numbers, but 0 is a perfect square number. All right, when we multiply 0 with 0 we get 0, so 0 is a square number. Here we can write 0 in square numbers. 0 is a square number, and 4 is a square number. All right, and 16 is a square number, and 25 is a square number. 25 is a resultant of 5 multiplied by 5. 16 is a resultant of 4 multiplied by 4. 4 is the resultant of 2 multiplied by 2, and 0 is the resultant of 0 multiplied by 0. And these are the square numbers. The next type of numbers is prime numbers. We have to write prime numbers. Prime numbers are those numbers which are greater than 1 and only exactly have 2 factors. उसके 2 factors होने चाहिए, एक 1 और एक number itself. So greater than 1 starts from here, and 3 is a prime number, and 11 is a prime number, and 19 is a prime. Only 3 prime numbers are given in the set because only 3 numbers have exactly 2 factors. Only 1 can divide 3, and 3 itself can divide 3. 11, only 1 can divide 11, and 11 itself can divide 11, and same for the number 19. Now I have to write the numbers. Next condition is neither square nor prime. जो square भी ना हो और प्राइम भी ना हो, बस वो नंबर्स हमने नंबर्स में से ये वाले नंबर्स निकालने हैं और ये वाले, इन 2 नंबर्स को निकाल देना, बाकी पूरा सेट लिख देना है. राइट, नीदर स्क्वायर नॉर प्राइम. नेक्स्ट पार्ट में नीदर स्क्वायर, -4, sorry, don't use this curly bracket. We are not writing the set, actually we are writing only numbers. Neither square, -4 is neither square nor prime. -1 is neither square nor prime. 0 is a square number.
1 over 2 is neither square nor prime. Similarly for 0.75, 3, 4 and 6 is neither square nor prime. 6 is not a prime number because 6 has 3 factors: 1, 2, and 3, 4 factors. 1, 2, 3. Suppose 1, 2, 3 and 4. So 6 is not a prime number. 11 is a prime number, 16 is a perfect square, 19 is a prime number, and 25 is a perfect square. So only these numbers are neither square nor prime. All right, this is all for question number 1. Let's move to question number 2. In question number 2, part A, the next 4 odd numbers, those integers that are those whole numbers that are exactly divided by, that are not divided by 2. So we have to write the numbers that are odd numbers after 107. 107 is not included in the required numbers. We have to next 4 odd numbers. 107 के बाद जो आता है 108 आता है. 108 आपको पहले बताया था. 108 में लास्ट नंबर देखना है 8. 8 is an even number, so 108 is an even number. 109, 110, 111, यहाँ पे मैं सारे नंबर कंसेक्टिव नंबर्स लिख रही हूँ. इसमें से हमने ऑड चूज करने हैं. 4 odd numbers after 107. 112, 113 and 114. This is an even number because 8 is an even number. This is an odd number, 109. After 107 is 109. Again लास्ट पे 0 है तो ये भी even number होगा. 111 is an odd number. 112, 2 is an even number, so 112 is an even number. इसको भी निकाल देंगे. 113 is an odd number and 114, 4 is an even number, so 114 is an even number. निकल जाएगा. और 115. These are 4 next odd numbers after 107. Okay, in B part, 4 consecutive जो एक के बाद एक आता है. जैसे कि ये भी consecutive odd numbers लिखे गए हैं. इनमें हमने कोई भी गैप नहीं दिया. एक odd number है, उसके फौरन बाद जो odd number आता है, उसके साथ वाला नहीं, क्योंकि वो तो इवन होगा. उसके फौरन बाद जो odd है, उसके फौरन बाद जो odd है, कोई गैप दिए बगैर. नेक्स्ट 4 उसने पूछे थे, इसलिए हमने कंसेक्टिव ही लिखे हैं. बी पार्ट में 4 कंसेक्टिव इवन नंबर्स मांगे गए हैं बिटवीन 2008 and 2030. Between these two even numbers, we have to write 4 consecutive even numbers. 4 consecutive even numbers, 2010. This is first even number after 2008, and 2012 is the next consecutive even number after 2010. 2014 and 2016. These are the 4 required consecutive even numbers between 2008 and 2030. I think that is all for today. Next video में इंशाल्लाह हम next parts इसके देखेंगे, solve करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में. Till then, अल्लाह हाफिज़.